बाद ये हम कट गाइड 3 सेक्शन या 4 सेक्शन बैक साइड से लेंगे और इसमें ही हम इस कट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे गाइस हमें लेंथ डिसाइड करनी है कि कितना करना है गाइस। इससे पहले अगर मेरे चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें गाइस। सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करो। ओके गाइस, हमने जो गाइडलाइन चूज़ की है यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने हैं हमें हेयर मैम के, ठीक है, तो नॉर्मल ही रखने हैं। ओके, नॉर्मल में ही थोड़ा बॉब लुक देना है। ये देखिए कैसे मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना है। पहले गाइडलाइन लेनी है और गाइडलाइन के बाद आप उसी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सेक्शन निकालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड सेक्शन निकाला है। सेकंड सेक्शन मैंने निकालने के बाद फिर से मैंने मिक्स किया है हेयर के अंदर, अच्छे से मैं मिक्स कर रहा हूँ। और सबसे पहले गाइस जो भी शैम्पू करो आप सबसे पहले उसको हेयर वॉश कर लिया करो, ठीक है। हेयर वॉश के बाद ही आप हेयर कट करा करो क्योंकि आपका हेयर कट काफ़ी स्मूथली होने लगेगा। ओके, यहाँ पर आप लेंगे ऐसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, और फिर उसको कट कर देंगे। ऐसे ही कट करना है। मेरा फ्रेंड वहाँ से मस्ती करता रहता है बैठा हुआ। चलिए गाइज हम अपने हेयर कट पर फोकस करते हैं। गाइज जो हमने गाइडलाइन ली है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट करेंगे। ये देखिए हमने लेफ्ट साइड का कंप्लीट कर लिया था, राइट साइड का हम गाइडलाइन मिक्स करेंगे जो हमने क्रिएट की है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट करेंगे। गाइज हमारी फिंगर की डायरेक्शन थोड़ा सा स्क्वायर में जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर में जाएगी जब हम एयर वाला सेक्शन लेंगे। ओके, अभी तो हमारा बैक साइड का है, मैं एयर वाले सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें थोड़ा सा हल्का सा मूव करना है अपनी फिंगर को। ये देखिए गाइज यहाँ पे हमने जो गाइडलाइन ली है वो लेफ्ट साइड से मैं उसी गाइडलाइन के थ्रू यहाँ पे कट कर रहा हूँ। बहुत ही इजी है गाइज हेयर कट। आप स्टेप बाय स्टेप इस हेयर कट को फॉलो करोगे तो इजीली आपसे हेयर कट ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट साइड की हमने गाइडलाइन ली है और इसको भी मिक्स करके हमने यहाँ पे कट कर दिया है। और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से हेयर कट करना है, ठीक है, कहीं से भी कोई हेयर रह ना जाए, ओके, अनइवन ना आए, इसलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एयर का सेक्शन खोला है लेफ़्ट साइड से ओपन करने के बाद ये देखिए हल्का सा मैं नीचे की साइड लूँगा अपनी फिंगर्स को, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं ऐसे कट कर दूँगा। यहाँ पे मैं स्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एंगल हल्का सा मूव कर रहा हूँ, ओके, जिससे कि बैक साइड के शॉर्ट आए और फ्रंट के हमारे हल्का सा लॉन्ग आए, ठीक है। अब इसी में ही कस्टमर्स बोल देते हैं कि हमें फ्रंट से लॉन्ग नहीं चाहिए, थोड़ा सा लेयर चाहिए। जैसे कि इन्हीं कस्टमर्स ने हमें फ्रंट से हल्का सा लेयर मूवमेंट बोला था। उसमें क्या होता है, लेयर्स में फ्रंट के शॉर्ट हो जाते हैं और बैक साइड से लेयर फिनिशिंग लुक में आता है। ये देखिए मैंने कैसे मूव किया है यहाँ पे, ऐसे ही आपको भी करना है। अच्छे से मिक्स करना है, फिर से आपको बार बार चेक करना है। ये देखिए फ्रंट से हमने लिया है सेक्शन और सेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पे गाइडलाइन डिसाइड करेंगे कस्टमर के अकॉर्डिंग, जितना भी उनको शॉर्ट करना है उनके फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग में रखेंगे। फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे लेफ्ट एंड राइट में। उसके बाद हम हल्का सा इसको शार्पनेस लुक देंगे लेयर्स में, ठीक है, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयर कट की तरह। ऐसे हमने इसको हल्का सा लेयर्स में मूवमेंट कर दिया है, ठीक है। हमारा राइट साइड का हो चुका है, अब हम लेफ्ट साइड का करेंगे ऐसे ही। लेफ्ट साइड हम मिक्स करेंगे और हल्का सा फिर से लेयर मूवमेंट में कट कर देंगे। हमारा हेयर कट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था गाइज। ये देखिए आपके सामने आफ्टर लुक, काफ़ी अच्छा हेयर कट है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके फॉलो कर लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गाइज, बाय बाय, एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय। To the crown area, that's where I shift this line to a slight diagonal and then go right down the center back. And then after I create that line in the center back, I go from the occipital bone across to just behind, a little bit below the ear, and a slight diagonal forward line. All right, so again, you want to make sure you have even saturation when you're trying to create a precise line. You don't want some of the hair to
to be dry, some of it to be wet. Dry hair shrinks a little bit, so make sure that when you're doing the part that you want to be precise, that you have even saturation throughout. So with body positioning, I want to have the head nice and high, almost like chest level with me. The way that I do this in the salon is a lot of times the chair doesn't quite go this high. I'll sit so I can get my eyes kind of level with the haircut. The biggest mistake that we make as hair cutters is a lot of times we'll kind of tilt ourselves to cut a line to get our head kind of down. And when you do that, you tilt your eyes. And when you tilt your eyes, it's hard to cut a straight line. Anytime you're cutting, feet should be pretty much square with your shoulders. Bend your legs into it. Keep your back straight so you're not hunched over like this cutting. Then you keep your eyes flat, your eyes parallel with your scissor, and then you cut your line. That's gonna give you a straighter line across. I'm gonna use the wide teeth of the comb, as little tension as possible. Hold the hair in the comb just like this. I'm gonna go about a ½ an inch from the hairline. For me, the longer you go, the harder it is that you're gonna get that stack or that kind of, it's gonna get too bulky. You could cut a one length as long as you wanted, but for me, like when you're in the grocery store and you see that person that has that really blunt haircut, and it just looks weirdly stacked in the back and really thick, a lot of that comes from length choice and density. So about an inch or ½ an inch from the hairline, and I'm going to come through here, everything parallel, and start my line. Now I'm not going to go too extreme with the first bit of the cut. I just want to start to get my guide in there. Then I'm going to come through, my eyes are level, I'm not even combing at this point, and I'm going to continue that line across. Just using the tip of the scissor to cut through. The reason I use the tip of the scissor and not all of the scissor is because once the hair ends up in this area of the blade, it starts to push the weight. So if I came in here and I just kind of started hacking at the hair, it would push that and then I would get a weird line. So I go in just with the tip and work my way across. I'm shifting my body because of the fact that I'm trying to show you guys. In the salon, I would not be walking around like this. So I comb the hair down, I keep my eyes square, and I go through and I cut and continue that line. If I wanted to follow the head shape around, then I would just continue this line through. I want to bring this hair back just a slight bit, a little bit of over direction. So what I'll do is I'll slide my scissor up under and my comb, and I'll pull it back towards me and then follow through with my cutting that way. What that'll do is just push a little bit of weight into this corner area. So I'll do the same thing on the opposite side. Got this little bit left here. So I'll pick it up, slide my comb up underneath, tap it down into the comb, and then I'm gonna go backhand across just like that. So now I wanna look at my line. If this line doesn't work, then you don't want to move forward because the whole entire haircut will be off at that point. So you can step back, take a look at it, make sure that those lengths are good. Anytime I lift this and pull it back, that over direction gives a little bit of elevation. So then when you drop it down, you'll see some of those little hairs that kind of stick out. I just take a slight bit of that off, not a lot of it, and I want to keep that line, I want to keep that length. But I just clean it up a little bit. All right, I'm gonna work at about a ½ inch at a time, straight across on the head. So nice clean parting, comb it down, get this hair over, and then I slide my clip up underneath the hair, just like that, and that helps hold it up and tight out of the way. The other thing I'm not doing is I'm not tilting the head too much forward. It's just a slight tilt forward. Really, that's just because we're working on a one length, so I want to make sure that I'm constantly looking at it from the way that she's going to be wearing it. Really what I'm looking for is I want this hair to rest up against the other hair. Comb this down just like that, and then I go through and cut the first bit, and then on the edge in the corner, I slide my comb up.